औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शौकत अहमद मल्ला, टीचर हाई स्कूल मंडीगाम। आज के इस ई लेक्चर में अपने तमाम स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में क्लास में खुशामदीद करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P। तो यू कैन गिव डिफरेंट आंसर्स। कोई ये कह सकता है दिस पॉइंट P इज इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, सही कहा। मगर कोई ये भी कह सकता है दिस पॉइंट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड, करेक्ट, ये भी सही है। कोई ये भी कह सकता है दिस पॉइंट P इज वेरी नियर टू द अपर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, ये भी सही है। मगर अब मैं आपसे पूछता हूं डज एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली डिस्क्राइब्स और एग्जैक्टली लोकेट्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P? नो। तो इस पॉइंट P की पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हमें किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। आई कैन से फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन। वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। It is 6 centimeter. This point P is at a distance of 6 centimeter from this vertical line, from the left edge of the board. Now, I will try to see that what is the distance of this point P from the bottom line of the board, from the horizontal line of the board. यहां से जो हमने डिस्टेंस ली हम ऐसे लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बॉटम लाइन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज नियरली 18 सेंटीमीटर। दिस इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली describes the position of the point P. We say that point P is at a distance of perpendicular distance of 6 centimeter from this left edge of the board. It is at a distance of 18 centimeter from the bottom line of the board. Now you see, we describe the position of the point P with the help of two reference lines. One line is this vertical line, and the second is this horizontal line. This vertical line is called as y-axis in Cartesian plane, in Cartesian system, and this line, this horizontal line, is called as x-axis. You see, we describe the position of the point P with the help of this x-axis and with the help of y-axis. I can say with the help of with reference to vertical line and with reference to this horizontal line. So you see that we are describing the position of point P. We are studying here the geometry of the point P, position of the point P, but with the help of its coordinates. This branch of mathematics and this tool of mathematics in which we study the geometry of the point, geometry of the figures with the help of its coordinates is called coordinate geometry. तो अब आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study
geometry, but with the help of its coordinates. इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. This is known as the x coordinate and this is known as y coordinate. And together we say them coordinates of the point P. Now, in this coordinate geometry, you have to learn how to study the distance between the 2 points whose coordinates are given. Secondly, you have to learn how to calculate or how to determine the coordinates of point which divides a given line in a given ratio. And thirdly, you have to study how to calculate the area of the triangle whose coordinates are given. Firstly, we will try to learn how to calculate the distance between the 2 points whose coordinates are given. Dear students, the formula with the help of which we study or we learn the distance, we compute the distance between 2 points is called distance formula. हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं. This horizontal line is called x-axis and this vertical line is called y-axis. यहां पर हम दो पॉइंट्स लेना चाहेंगे. Suppose this is point P and here it is point Q. The perpendicular distance of this point P from this vertical line, from this y-axis, is called x coordinate. Suppose it is x1. And the perpendicular distance of point P from this x coordinate, it is called y coordinate. Suppose it is y1. Similarly, here it is x2, comma y2. We will join these 2 points. And we are interested to know the distance between point P and Q. To calculate the distance, you have to develop a formula for the distance for calculating the distance between P and Q. We draw two perpendiculars from P and Q on the x-axis. Suppose we draw here PR and QS. We will draw another perpendicular from P on the QS. Suppose it touches the line QS at point T. It is origin O. Then you see here OR. It is the perpendicular distance of point R from the y-axis. It is here x1. OS, it is perpendicular distance of point S from the origin. It is x2. This implies so RS. This RS, it is equal to OS minus OR. OS minus OR. OS is equal to x2. And OR is x1. Now you see SQ. It is the perpendicular distance of point Q from the x-axis. It is y2.
and ST. It is perpendicular distance of point P. It is equal to RP. Perpendicular distance is also equal to perpendicular distance of point P from the x-axis. It is here y1. So ST, we have to calculate TQ or QT. So QT is equal to QT. It is SQ minus ST. SQ minus ST. You see here SQ is y2 and ST is y1. So now we have to find the distance PQ. You see here PTQ. It is a right angular triangle. And dear students, आप ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल हो तो उसका अननोन साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यूजिंग या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी टू ट्रायंगल पीटीक्यू। यहां पर आप क्या देखेंगे, PQ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इट इज इक्वल टू sum of the squares of other two sides PT square plus TQ square या QT square PT square। PT आप यहां पर देख रहे हैं PT है हमारा बराबर RS PT इट इज इक्वल टू RS। PT एंड RS बराबर है यहां पर PT जैसा जितना PT है उतना ये RS होगा। तो PT हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। QT यहां पर आपने कैलकुलेट किया इट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारा जो PQ होगा अगर हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक रेडीमेड फार्मूला आ गया टू कैलकुलेट द डिस्टेंस between 2 points P and Q, that is equal to PQ, it is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। इस फार्मूला को यूज करके आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। So we can say that if we have 2 points P having coordinates x1, y1 and Q having coordinates x2, y2, the distance between P and Q denoted by PQ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This formula is known as distance formula. पहले बच्चों अब हम इसी फार्मूला को यूज करके आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 द पेयर ऑफ पॉइंट्स इज हियर 2, 3 and 4, 1। देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको P के बदले 2, 3 है एंड Q के बदले 4, 1 है। आपने देखा कि P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 थे और Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 थे। तो हम यहां पर कह सकते हैं here x1 is 2, y1 is 3, x2 is 4 and y2 is 1। So distance, required distance is equal to required distance is square root of, as per the distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to square root of, देखिए यहां पर x2 क्या है 4 हो गया 4 minus 2 whole square plus y2 यहां पर है 1, y1 है 3 हो गया 1 minus 3 whole square can be further simplified as 4 minus 2 हो गया 2 square and y minus 3 हो गया minus 2 whole square। 2 square
It means 2 into 2, 2 2s are 4, माइनस 2 स्क्वायर, माइनस का भी अगर स्क्वायर ले दें तो प्लस बन जाता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 हो गया इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट जो 8 है इसके फैक्टर्स लेना चाहेंगे तो 2 4 हो गया 8, 2 2 हो गया 4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 2। इन दो 2 की पेयर बन जाएगी, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो अंदर रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह आपने देख लिया we calculate the distance between these 2 points with the help of distance formula, which came out to be 2 under root 2 centimeters। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कैलकुलेट की distance between the 2 points with the help of its coordinates, so that is why this branch of mathematics is known as coordinate geometry। तो इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर जिंदगी रही आइंदा आपसे फिर से मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज।